welcome back to Understanding Economics. My name is मानवी नोचा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि what is GST and what if the prices of petrol come under GST. तो GST का बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है. GST सबसे पहले फ्रांस में आया था 1954 में और इंडिया में GST लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 को. तो जीएसटी ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत पहले से बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रिवेल कर रहा है. बट क्या जरूरत है जीएसटी की? नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम चल तो रहा है. जीएसटी का काम है टैक्सेशन सिस्टम को आसान करना. डबलिंग इन द टैक्सेस मतलब एक ही कमोडिटी पे आप 2 बार टैक्स पे कर रहे हैं उसको रोकना. और कैसे? बहुत डिफरेंट टैक्सेस जैसे सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको रिमूव करके एक टैक्स लगना, दैट इज जीएसटी. एंड दैट्स व्हाई वी से वन नेशन वन टैक्स. सो नाउ हाउ डज जीएसटी वर्क? जीएसटी काम कैसे करता है? जीएसटी एज वी नो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स, वेट अ सेकेंड. यस, टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं. First is the direct tax and second is the indirect tax. Direct taxes are those taxes जिसका burden आप final consumer पे shift नहीं कर सकते. For example, income tax and corporate tax. Whereas indirect tax जैसे GST, इसका burden if you are a seller, आप इसका burden final consumer पे shift कर सकते हैं. For example, if I go in a market और वहां मैं कप ऑफ कॉफी परचेज करूं तो मुझे उस पे 5% जीएसटी पे करना होगा, जो कि पहले कुछ अराउंड 6% हुआ करता था. तो इससे 2 चीजें निकल के आती हैं. फर्स्ट, जीएसटी के आने से कुछ कमोडिटीज के प्राइस बढ़े हैं और कुछ कमोडिटीज के प्राइस कम हुए हैं. सेकेंड, 5% जीएसटी ही क्यों? देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ जीएसटी. 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% GST and 28% GST. In total, there are 5 slots of GST. और different slots के अंदर different commodities आती हैं. कौन सी commodity कौन सी slot के अंदर आएगी वो उस commodity की nature पे depend करता है. जैसे उस commodity की demand कितनी है, supply कितनी है, क्या वो commodity एक basic necessity है या वो एक luxury है. Now there are different types of GST. Also, CGST, SGST, IGST and UDGST, जिसके बारे में डिटेल में you can see it on the screen. CGST is the Central Goods and Service Tax. SGST is the State Goods and Service Tax. IGST is the Integrated Goods and Service Tax, and UDGST is the Union Territory Goods and Service Tax. Now you can see some advantages and disadvantages of GST also. जहाँ जीएसटी ने टैक्सेशन सिस्टम को काफी इजी बनाया था, वहीं जीएसटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे. सबसे पहले, जीएसटी के आने से हमारे स्मॉल बिजनेसमैन को काफी दिक्कतें आई. जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझने में और उनको अपनी बुक्स में उतारने में ऑपरेशनल कॉस्ट काफी इंक्रीज हुआ. सेकेंड, एक्सपर्ट्स ने पहले ही बोल दिया था कि जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट विल बी नॉट गुड फॉर द शॉर्ट रन. इससे काफी कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो होगी. बट इसके फायदे हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे. नाउ कमिंग टू क्या हो अगर पेट्रोल प्राइसेस जीएसटी के अंदर आ जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, इससे हमारे पेट्रोल प्राइसेस 75 रुपीज तक नीचे आ सकते हैं और इससे काफी यूनिफॉर्मिटी भी आएगी पेट्रोल प्राइसेस में इन ओवरऑल कंट्री. राइट. So, इसके लिए the government is planning to bring some changes in GST to bring the prices of petrol and diesel in GST. What changes? Let's assume it's an assumption that one new slot could be opened in GST, which will obviously not less than 28%. It is an assumption again. So, if a new slot, as we have discussed the slots of GST previously, so if the new slot, one more new slot is opened in GST, which is obviously not less than 28%, then there is a possibility that in future the prices of other commodities could also increase. Second,
Let's assume that there is no change in GST and the 28% GST is charged on the prices of petrol. So that's also good news, right? Petrol prices come ho jayenge. But as we have discussed in the previous video that the prices of petrol depends on two things, that is government putting tax on them and the prices of crude oil in global market. और पिछले साल से we have observed that the prices of crude oil is highly flexible because of corona. So if the corona cases world over फिर से increase होते हैं, then the prices of crude oil will again come down. But the taxes are fixed, so the prices of petrol would again fall. Right? But is it really a good news? No, because the taxes on petrol prices play a major role in the government's revenue, and the government's revenue would face a drastic fall and the deficit would increase. And again, the government's revenue will, the scale of government's revenue will face major ups and downs because the taxes are fixed. And plus, India is a big country जहाँ पे कोई भी एक minor सा change बहुत major consequences create कर सकता है. And again, this would be a very big change. So what is the solution then? Till now we have observed the prices of petrol play a major role, and what we need now is the prices of petrol to come down and stability in the prices of petrol. और GST के petrol prices को GST के अंदर लाने से ये चीजें मुमकिन हैं. But as we have discussed above, इसके कुछ consequences भी हो सकते हैं. तो फिर क्या करें? For states, there should be a tunnel. No, वो tunnel नहीं जो आप सोच रहे हैं. Tunnel that would tell the states how much tax they can put on the prices of petrol. That would put a limit on the states that they could put taxes on petrol prices only from one certain point to another certain point, and that could be independently decided by the states according to their demand and supply of petrol. So the prices of petrol would come down and there would be stability in the petrol prices up to some extent. Now what about the excise duty that the central government put on the prices of petrol? The government should be more flexible with the taxes. If the prices of crude oil in global market is increasing, the government should immediately reduce the excise duty on the petrol prices, ताकि आम आदमी पे इसका असर ना पड़े. And as responsible citizens, we need to realize that if the government is putting tax on us and that is adequate according to our capacity, मतलब हम उसको पे कर सकते हैं और इससे हमारी इनकम पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, then we should not bargain and we should pay, because in the end वो हमारे ही welfare के लिए है. So with this we come to the end of our story. And if you find this video worth watching, then do like, subscribe and share. Do justice to it. So, and I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.